and our topic is weight, right? So, by definition, we know that Newton's second law says that whenever an acceleration is produced in a body, it means that there is some kind of force behind it. Okay? So, in this case, we have to consider Newton's second law, and we are going to discuss Newton's second law to find out what exactly is weight. By Newton's second law, acceleration is produced by सम फोर्स. सो इसका मतलब है जब भी किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उसके पीछे कोई ना कोई फोर्स ज़रूर होगी. जब भी कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है ओनली देन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. सो एज we know that whenever a body falls towards the earth it also gets accelerated, right? हमने इससे पिछले चैप्टर में काइनेमेटिक्स में भी यही पढ़ा that if I have an object and I drop that object to the ground, it will, it won't just only move but will accelerate with, the magnitude of 9.8 meters per second square. So जब भी हम किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं उसमें वो एक सर्टेन स्पेसिफिक एक्सेलरेशन के साथ टूवर्ड्स द अर्थ ड्रॉप होती है. अर्थ के लिए 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर के साथ वो ड्रॉप होगी. सो इन दिस केस इस एक्सेलरेशन के पीछे कौन सी फोर्स है? सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट एक्सेलरेशन, और इन शॉर्ट व्हाट इज़ द फोर्स दैट इज़ बिहाइंड दिस, दैट इज़ causing this acceleration? The force which is exerted by earth. Okay, now we're coming towards the force. The force which is exerted by the earth is called weight और ग्रेविटेशनल फोर्स. सो जब भी अर्थ किसी चीज़ को अपनी तरफ पुल करती है देन चीज़ें एक्सेलरेट होती है. सो यूजुअली जब भी हम किसी चीज़ को यूँ इस तरह से ड्रॉप करेंगे उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी. एंड एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होगी? बिकॉज द अर्थ इज़ पुलिंग एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है. सो फोर्स कौन सी हुई? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड दिस काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड weight. Okay, so from now onwards you don't have to get confused with weight and mass. Mass is something else and weight is something else. Mass is the quantitative measurement of inertia, वो हम डिस्कस कर चुके हैं. दैट इज़ mass and it's measured in kgs. And weight is just a kind of force with which the earth or any planet pulls the other objects towards itself. ठीक है. So weight क्या है? This is just a gravitational force. As weight is a force, therefore its unit is Newton. Of course weight एक specific किस्म की force है but ये है force. So therefore because due to it's being called a force, its unit would also be the same as force. So हमारा weight हमारे पास एक किस्म की फोर्स है. सो इसका यूनिट भी बिल्कुल फोर्स वाला ही होगा. दैट वुड बी न्यूटन एन and represented by n. And therefore as force is a vector quantity, therefore weight is also a vector quantity. Coming towards the mathematical part, by Newton's second law, because हमने ये सारी derivations Newton's second law से की. Newton's second law ने हमें बताया that whenever acceleration is produced it means that there is some kind of force behind it. So by using Newton's second law, F equals to ma, right? But we have to modify this equation. We have to rearrange this equation, or we have to हमें अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग या हमें अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करना होगा. बिकॉज इन दिस केस फोर्स क्या है, mass क्या है, and acceleration क्या होगी for this case, for the case of weight or for the case of the gravitational force. As in this case the force is actually the weight of the object. Okay, ये force कोई और force नहीं है. मैं पकड़ के किसी object को pull नहीं कर रही हूँ. The weight itself, the weight of the body, or you can say the gravitational force on the body is pulling the body towards the earth. तो कौन सी force act कर रही है उस body पर? The gravitational force, or we can call that force as weight. So हम F को W से replace कर सकते हैं. This force can be replaced by small w. Remember that we have to write small w because in this case force कौन सा टाइप की है? The force is weight. ओके, सो F की जगह हम वेट के लिए W प्लेस करेंगे. M वैसे ही रहेगा बिकॉज मास चेंज नहीं होता ऑब्जेक्ट का. ठीक है, वेट हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कैसे चेंज होता है. रिमेंबर दैट मास चेंज नहीं होता. एंड A की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट
small g over here, because acceleration कौन सी वाली acceleration है? This acceleration is actually the gravitational acceleration, which is represented by small g. As in this case, the force is actually the weight of the object and acceleration a is actually the gravitational acceleration g. So हमने न्यूटन सेकंड लॉ को अपने केस के अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया. F की जगह W प्लेस करेंगे, स्मॉल w, एंड A की जगह G. So it would become W equals to mg. Right, this is the basic equation, the basic formula for finding out the weight of a body, and you will use these formulas in your numerical problems as well. Coming to us is next key point. If m is 1 kg and g is 9.8 meters per second square. ठीक है, so हमने फाइंड करना है कि अगर हमारे पास 1 kg mass है तो उसका weight कितना होगा. Okay, so for a mass of 1 kg, G would be 9.8 meters per second square for Earth. ठीक है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप हो रहा है, उसका मास 1 kg है, उस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है, दैट वुड बी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि कांस्टेंट है. देन वेट क्या होगा? वी कैन जस्ट यूज द वैल्यूज ओवर हियर. W इक्वल्स टू m की जगह हम 1 kg था तो 1, और G की जगह क्या प्लेस करेंगे? 9.8. m की जगह 1, बिकॉज हमने 1 kg मास लिया, एंड g की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8. सो 1 इंटू 9.8 इक्वल्स टू 9.8. बट मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर अब नहीं लगेगा, अब यहाँ पर न्यूटन लगेगा, बिकॉज न्यूटन इज द यूनिट ऑफ वेट. ओके, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स एंड वेट एज वेल. So Newton is used for both. Okay, so for a body of mass 1 kg, its weight would be 9 by 9.8 would give you 9.8 Newton, right? So in this case, for each 1 kg of mass, the weight would be 9.8 Newton. And आप अपना weight भी find कर सकते हैं. How can you find out your weight? You can just multiply your mass with 9.8 and you would get your weight. You can also find it, or you can also try this out at your home. As the value of g varies for every planet, therefore the weight of every object is different on every planet or heavenly body. So we know that g, which is 9.8 meters per second square, is just this value is just for the earth. हमें पता है that whenever we go to moon, इस g की value change हो जाएगी, or for the sun, value of g would be different. The value of g for Mars or Saturn or Jupiter would also be different. So value of g पोजीशन पर डिपेंड करती है. ओके, हम डिपेंड करती है कि हम किस प्लैनेट के बारे में बात कर रहे हैं. ये 9.8 वाली बात मैंने अर्थ के लिए की, बट व्हाट वुड हैपन इफ वी गो टू द मून? Because on the moon, this gravitational acceleration is not 9.8. This gravitational acceleration for moon is 1.67 into 1.67 meters per second square, right? So in this case, अगर आपका mass 1 kg है, let's suppose, और therefore आपका weight on earth, that would be 9.8 Newton. But for the moon, every 1 kg mass would weigh 1.67 Newton. ठीक है, so इसका मतलब ये है कि that the weight of that object would be very less on moon as compared to the earth. अर्थ पर जो वेट है that would be 9.8 for 1 kg. ठीक है, और जो आपका मून पर वेट होगा for 1 kg, that would be 1.67. अगर आपका वेट 2 kg है तो 2 इंटू 1.67 कर लेंगे, 3 है तो 3 इंटू 10 1.67 कर लेंगे. ठीक है, सो इट मीन्स दैट आपका वेट हर लोकेशन पर डिफरेंट होगा. अर्थ पर डिफरेंट होगा, मून पर डिफरेंट होगा. अर्थ पर ज़्यादा होगा बिकॉज अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा है. मून पर कम होगा बिकॉज मून की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बहुत कम है, दिस इज जस्ट 1.67. ठीक है, जुपिटर पर अभी ज़्यादा होगा बिकॉज उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज़्यादा है. सन पे बहुत ही ज़्यादा होगा बिकॉज उसकी बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. सो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से प्लैनेट पर या कौन से मून पर exist करते हैं, where on which planet you are standing at that moment. ठीक है, therefore weight of every object depends upon the location. ठीक है, weight depend करता है कि body कहाँ पर placed है, and can vary in different areas. But remember that the mass of object remains the same.
we can say that अगर आप आपका weight 9.8 न्यूटन है on earth and 1.7 न्यूटन है on the moon. Okay, it can vary depending upon your location, but remember that the mass will not vary depending upon the location. Okay, अगर आपका mass let's suppose 90 kg है on earth, then moon पर भी वो 90 kg होगा, sun पर भी वो 90 kg होगा, right? सो यूजली जो हम मेजर करते हैं दैट इज़ वेट, दैट इज़ नॉट मास. यूजली हम डेली लाइफ में जो मेजर कर रहे होते हैं दैट इज़ स्पेसिफिकली द वेट इटसेल्फ, इसलिए वो थोड़ा सा वेरी करता है. बट मास इज़ फॉर अ नॉर्मल ऑब्जेक्ट. अगर आप अगर आप इवन ये पेंसिल कंसिडर करते हैं, देन फॉर दिस पेंसिल इट्स मास विल बी द सेम. Either if it's on Earth or on Moon or Jupiter, wherever it is, mass will stay the same, while weight can differ depending upon the location of the object. Okay, so this was all for today. Thank you so much, everyone.